खुतुबु जद्दिन. चलें. So in this chapter we will read about kalkala. Okay, so kalkala means extra sound, echo sound. Okay, so there are 5 kalkala letters which are qaf, ta, ba, jim, dal. So you can call them qutubu jaddin. You have to memorize it like qutubu jaddin. Okay, so it is जी. easy to memorize. So basically इन पर kalkala कब apply होता है? When we would do kalkala on these letters. So when there is a sukoon sign on top of kalkala letter. So what is sukoon sign? Sukoon sign looks like this. We can call it connecting sign in English and jazm sign in Arabic. Okay, so basically we say it sukoon sign, और इसको जज़म साइन भी बोल सकते हैं, connecting sign भी बोल सकते हैं. Okay, so the thing is that the letter having sukoon sign is called sakin. Got क्या it? साथी? Sakin. The letter having sukoon sign is called sakin. For example, sukoon sign साकिन. sakin. Yes. Got it? SAKIN. Yes. ठीक है, ओके इसको जी. साकिन बोलते हैं. जिस लेटर पर सुकून साइन आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? साकिन. साकिन. ठीक है. ठीक है. For example, ba has sukoon sign, so ba is a sakin letter. Sa has sukoon sign, sa is a sakin letter. यहाँ पर सारे sakin letters हैं because they have sukoon sign. सुकून साइन. ठीक है. ओके. So now we were talking about qalqala letters. So the question is, when we will do qalqala on these letters? Basically these are qalqala letters, but the thing is that हम इन पर qalqala without reason नहीं कर सकते. There is a one reason to do qalqala on these letters. So what is that? So when there is a sukoon sign on top of these qalqala letters, इनमें से कोई भी लेटर जो है वो साकिन होगा, देन वी हैव टू डू कलकला. कलकला. हम एक्स्ट्रा साउंड प्रोनाउंस करेंगे. when we will pronounce extra sound when there is a सुकून sukoon साइन. sign comes on top of these दिस letters, on top of any कलकला. of these letters. Okay, किसी भी लेटर पर अगर वो sukoon sign आ जाए तो हम क्या करेंगे? ये कलकला करेंगे. ठीक है. So जी. hopefully you understood this one. So let me वो साउंड कैसे होता है वो तो बताएं. now I am going to explain about sound because I need to open this page first. So basically, as you know that, as I told you, qutubu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. So तो as you जद. can see, yes, as you can see, ba is a qalqala letter, right? या. Because qutubu ba, there is a ba, jaddin, jim, dal, qaf, ta, ba, jim, dal. So as you can see, ba is qalqala letter. So if we will pronounce, and also it has sukoon sign, so definitely we have to do कलकला. yes. So how we will do this? Hamza ba zabar ab, Hamza ba fatha ab. Fatha के साथ भी पढ़ सकते हैं as you are saying zabar zer पे. So we will say Hamza ba zabar ab. So b, as you can see, there is I'm pronouncing an extra sound ab. Got it? For example, if I say it without kalkala, then I have to say Hamza ba zabar ab ab. Now with kalkala ab. अब ओके. समझ आ गया मेरी बात? जी. ऐड करना है लास्ट में. ऐड करना है अब. यस यस. ओके. इसको पढ़ेंगे कैसे? हाँ. हमजा जबर आ बा. No. Let me tell you. Basically, we have to connect two letters with each other with this sign. So another thing I'm gonna tell you about this sign. The letter having sukoon sign cannot be pronounced. We have to take help of previous letter sign. Okay. हम जिस लेटर पर ये साइन आएगा, we cannot pronounce without helping. इसके साथ हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, otherwise we cannot pronounce. For example, if there is just sukoon sign and comes on top of any letter, for example, we can say about ba. For example, ba has sukoon sign, you cannot pronounce. हम इसको नहीं pronounce करते, we cannot read this.
But when we have to write any letter here with maybe fatha, kasra, or zamma, then we can read this one together. How? Now I'm going to tell you how. Okay. Hamza ba zabar ab. Hamza ba zir ib. Ib. Hamza ba pesh ub. Then we have to pronounce again ab, ib, ub. Okay. Got it? Yes. So you have to say it now. Same thing is here. Let me tell you about this. As you can see, ta is not a qalqala letter. See? Okay. So how we will do this? Hamza ta zabar at. We cannot say At. Hamza ta zabar at. That's wrong. है? समझ आ गई अच्छा. मेरी बात? Because this is not qalqala letter. When you will हाँ, memorize these qalqala yes. letters, then you will understand about this. Okay. Understand? First, this will be your, like, you have to memorize first. Before practicing on this page, you must memorize first this one, like about kutubu jaddin qaf ta ba jim dal. You must know about these letters, because when you will know about these letters, definitely then you will you will understand like where you will do qalqala or where you cannot do qalqala. Okay. Okay. So, as you can see, ba is a qalqala letter. We have to do qalqala. Ta is not a qalqala letter. Sa is not a qalqala letter. Jim is a qalqala letter. Dal is a qalqala letter. Ta is a qalqala letter. This ta. I'm not Yeah. talking about ta. Okay. So, ta is a qalqala letter. Qaf is a qalqala letter. So, आपने इनको qalqala के साथ pronounce करना है. You have to pronounce it with qalqala. So, जी. how we will do this? हमजा बा जबर अब. Yes. Next. हमजा बा जेर इब. Good. MashaAllah. Next. हमजा बा पेश उब. Very good. इसको अब हमने इब उब. Yes, but you have to pronounce with qalqala, like ab, ib, ub, उब. like that. जी. समझ गए? अब इब उब. Yes. हमजा Next. ता जबर अत. No. We will not say at like this. It's hamza ta zabar at. Simple. अत. At. अत. Yes. हमजा ता जबर अत. हमजा ता जेर इत. हमजा ता पेश उत. हमजा हमजा अब इसको साउंड, इसका साउंड भी ये प्रोनाउंस करना है ना? अत इत उत. नहीं, आपका एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है. at ऐसे नहीं. at अत अत at sound कट it should be करना. finished. अत हाँ, कट कर देना है. At, अत it, इत ut. उत. ओके. Yes. Okay. So you have to say now next. अभी इसका वो रूल का खोलें. सा is not a qalqala letter. जी सा जो है ना qalqala letter नहीं है. नहीं है. ओके. हाँ. Let me send you this page. जी. This one is qalqala. I just sent you this page. You have to memorize after your class. So right now you have to say this one. खुतबुत जद्दिन. Yeah, you हमजा memorize. हमजा सा जबर. हमजा सा जबर अस. Ta. हाँ सा. Ta. वही सा. Yes. हमजा सा जबर अस. At. अस. Yes. हमजा सा जेर इस. We will not say sa. It's सा. ta. सा. सा. हमजा ता पेश उत. No. This is sa, and we have to say hamza sa zabar as, hamza sa zir if, like this. हमजा सा जबर अस. अत. हमजा सा जेर इत. जी If we have to इत say it like yeah. इत. हमजा No.
basically you have to pronounce sa with s sound without whistle sound. Sa. Understand? Sa. Hamza sa zabar as sa. As. और एक बार बोले. Hamza fa zabar as like this. सा साउंड आना है ना या नहीं सा आना? आना है बट आप इसको ना विसल साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, हमने विसलिंग से बचना है. ओके. समझ गए? हमजा सा जबर अस. यस. नेक्स्ट. हमजा सा जेर इस. हमजा सा पेश उस. अस इस. आपने विसल साउंड से बचना है डेफिनेटली. ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बट प्रैक्टिस के साथ इसको रिमूव करना है. लाइक अगर आप उस देखें ना, फॉर एग्जांपल इफ यू विल से उस एंड ये जो है ना इसके साथ सेम हो जाएगा सीन के साथ. हमजा सीन पेश उस, हमजा सा पेश उस. तो हमने इनको डिफरेंट रखना है. सो यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक हमजा सा जबर अस, हमजा सा जेर इस, हमजा सा पेश उस, अस इस उस. समझ गए? जी. तो वो ये इसके जैसे साउंड हो रहा है ना, ता के जैसे. ये बा नहीं के बाद जो ता है. नहीं, इस ता के जैसा साउंड नहीं हो सकता ना, बिकॉज देखिए मैं इसको अत नहीं कह रहा, इसको मैं अस कह रहा हूँ. अस बट अस नहीं कह रहा. अस अस नहीं कह इस रहा. अस हाँ विसल से अस बचना है आपने. ये अस जो सीटी अस साउंड है यू हैव टू अवॉइड दिस. नहीं आना है. जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके. हमजा सा जबर अस आज फिर आ रहा है. ओके. वो नहीं नहीं प्रैक्टिस. हो जाएगा इंशाल्लाह. प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा. बट अस मैं आपको बताया इसको इस प्रैक्टिस अस करना है. अस अस इस उस. जी अभी बेहतर है बट ये सा लास्ट वाला उस, इसको थोड़ा सा सही करना है. उस. उस उस. जी नेक्स्ट. कलकला लेटर है. हमजा जीम जबर. हमजा जीम जबर अज. अज. यस बिकॉज दिस इज कलकला. ओके. हमजा जीम जबर अज. हमजा जीम जेर इज. हमजा जीम पेश उज. अज इज उज. चलें मैं आपको ये पेजेस भेज रहा हूँ और फर्स्ट आपने जी. उसको मेमोराइज करना है. देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दिस.